Are you going to appear in a Barclays bank? Or want to make career in corporate banking? Here is CA Gaurav Yadav, who is working in Barclays Bank, who will help you with all your doubts. So watch till the end to get most of it. Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we have Gaurav Yadav with us. Gaurav had qualified as CA in July 21 and right now is working at Barclays Bank. So let's share more about Gaurav from Gaurav, please. Thank you. Thank you, Sudhanshu. So my name is Gaurav Yadav. I hail from Delhi. I recently moved to Noida with my family. Yeah, as I talk about my education, I am a chartered accountant by profession, qualified in July 21. I did graduation from Sri Ram College of Commerce in 2015. I did my schooling from CBSE board, Navyuk School, Lodi Road, affiliated under CBSE board. If I talk about my work experience, I pursued my articleship in direct taxation and I worked there for almost 2 years. And apart from that, for remaining 1 year, I have worked in internal audit and ROC compliances. And post completing my articleship, I have worked in statutory audit domain in a chartered accountant firm located in Horsecast, New Delhi, where I was worked in statutory audit domain. And after qualification, I have joined Barclays in November 21. In Barclays, I have been working as a financial controller in corporate banking domain. So basically, we are one of the branches of Barclays, which are registered in UK, and we need to comply based on the role which are assigned to us. So this is something about brief introduction about myself. Anything specifically you would like to know? No, we will cover most of the things in the later part of the video. So Gaurav, after qualifying CA, how did you get into Barclays? Was it through ICAI campus या off campus आपने apply किया था LinkedIn नौकरी वैसे उसके बाद फिर हो गया आपका? So like after qualification, I reached out to one of my close friend who is currently working in Barclays. He referred me to the profile. So my profile is basically financial control. So we need to ensure that whatever you can say the transactions are going in Barclays branch, we need to ensure that we are complying with all the Barclays financial control. So my friend has referred me here, and after uh, getting the like after getting referred, I was underwent to by 2 rounds. In round one, I was asked questions on Ind AS 115 and 109. And in round two, that was a VP round where they have asked situation and technical questions such as like how would you handle pressure, what are your weaknesses, and what are your strengths. Basically, they tested the questions based on the management requirement. That's their job. So I cleared both the rounds, the round one and round two, and after that I got selected. So this is the procedure through which I got selected. But if I would recommend, then how would anyone can get into Barclays? One must need a reference. Alternatively, one must apply through the website, and post that HR will call the desired candidate which are meeting the criteria, and they need to uh, go with the remaining technical, or you can say HR round to qualify, and accordingly they can get into the Barclays. Okay. So when we hear business control of Barclays Bank, so majorly what exactly do we you do in Barclays? क्या regular day to Sure. day work होता So है? if I talk about the Barclays, since Barclays is a UK-based bank which are currently dealing in banking business and as well as the investment banking business, you can say IB business. So if I talk about the profile, banking business are controlled by financial controller. So I am a part of corporate banking team. And apart from that, the IB team, the investment banking team, they have product controller. So we have a team in Chennai which are exclusively dealing in investment banking and related products. So those
so those people are known as product controller. We in say I am in Noida working in financial controller. Here I am controlling or managing the affairs and day-to-day activities from corporate banking point of view. So this is the basic division of Barclays business. And if I talk about the structure, so Barclays has various branches. So I am working as a controller of uh, one of the main branches of the Barclays, which facilitates many transactions, such as only our branches are allowed to do hedging in the market. Apart from that, there are various other transactions which specific branch can do. If I can explain in Indian market, for example, there is an act of FCRA Act. So only SBI branch which are located in CP Parliamentary House are authorized to do certain transactions which are related to FCRA. So similarly, we are the branch which are authorized to perform certain specific transactions which are abide or which are required by the management. And apart from that, my total role is bifurcated into monthly and quarterly reporting, where if I talk about the quarterly reporting, we need to comply with the requirement of Bank of England, which is the central bank of UK. Similarly, we have RBI in India. We need to comply with Bank of England's guidelines. So they have certain regulatory requirements, regulatory forms, which we need to ensure that we are complying on behalf of our branch. And apart from that, on monthly uh, activities, we do perform accounting. We do account for the loans and deposits in our financial statement. We do have our financial statements review meeting every month with VP and quarterly with directors. Apart from that, since in banking industry, we have loans and deposit are major financial asset and financial liability. And in case of financial asset, we came across impairment as a major component. So we do perform impairment calculation and sense check perform, where we do get information from a certain credit agency. Such agencies are Moody's, Standard and Poor's. Apart from that, there are various other reconciliation which we do prepare on monthly basis. So this is the brief role where I am currently working. Okay. Okay. So once we get into this banking profile, is it very smooth process to get into any other manufacturing kind of thing, or it's gets tough? Since Barclays is a bank of and exclusively dealing in financial service, so one must get difficult if they want to switch to some other industry. In case a person is looking to move into the similar industry, there are certain I can say certain banks and financial institutions. For example, Macquarie is the biggest competitor of Barclays. HSBC is there. So they can easily move into the similar sector, but it would Mm. be very difficult to get into other sector because every profile require a specific job requirement. So Mhm. if a person is meeting such requirement, then in such case, he or she can get the movement easily. Otherwise, the profile would restrict only to financial services or banking related products. Okay. Okay. So Gaurav, if I talk about Wipro, there's a job rotation after every 2 years or 3 years. तो क्या Mhm. बार्कलेज या सिमिलर बैंकिंग नेचर में भी जॉब रोटेशन होता है, और इज इट दैट कि आप एक बार उस डोमेन में चले गए तो आप फिर जब तक उस कंपनी में रहोगे सेम प्रोफाइल आपका चलता चला जाएगा? So in Barclays, we do have job rotation, but that is in the form of internal job posting. So to apply for internal job posting, one need to ensure that he or she must complete at least 1 year in the organization. And accordingly, after applying for internal job posting, that is IGP via website, Barclays job portal, he or she must be required to clear the interview round. And हम्म. only after that, one can switch the department, you can say, and one can switch the profile.
there are provision, but there Barclays has certain process which a person needs to complete before getting into other profile, and it's totally depend on the interview whether it is cleared or not. And Mm-hmm. similarly, if a person is applying for a you can say higher position, for example, if I would be like applying for a higher position. Currently I'm working as assistant manager or analyst, and Mm-hmm. in future whenever I would be like comfortable that I am eligible for a higher post, I need to apply through a respective portal for higher post, and accordingly I need to go through when matlab, I need to clear the interview round, and then I'll be like able to perform my responsibility as a higher officer or higher uh, person Yeah. So, based on the structure. हम्म, तो इंटरनल तो ठीक है, but let's suppose if I join Barclays और उसके बाद Mhm. फिर आई एम थिंकिंग कि let's now move on to बिग फोर या किसी कंसल्टिंग में, तो Okay. तो फिर क्या कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी if I So go if to I Barclays? specifically talk about the consulting or the big four, so here we are like working in various Ind AS or IFRS, you can say. So here the IFRS which are applicable on banks are IFRS 9, 15, and 16. So one need to have a good knowledge of them, and only after that a person can apply in a related profile if they want to switch to big four. For example, currently I have an experience of financial reporting where I have worked for almost 1.5 year in for working in IFRS 9. So in big four it is very difficult for me to work in other profiles such as statutory audit, internal audit, deal advisory, merger acquisition, and taxation. In Big Four, will only be able to move into the reporting profile or the financial reporting profile. If I can call out certain profile in Big Four, in EVA we have FAS, in GT we have FRAS, in KPMG we have a CFO advisory. So these are the certain profile where we can probably look to move in case we are planning to move to Big Four or any consultancy firm. ओके, ओके, तो एडवाइजरी में बेसिकली जा सकते हैं once we are Right, moving to. right. Financial reporting related you can move because आपका इसके अलावा कहीं experience relevant होगा नहीं. Okay, but then if I want to switch to other banks, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs या कोई सा भी आप Mhm, उठा लो, तो उसमें mhm. it is very easy और काफी स्मूथ प्रोसेस होगा हाँ, कंपैरेटिवली. इस केस में भी if I talk about the other banks, so यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको जैसे डिविजन बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अलग है और कॉर्पोरेट बैंकिंग अलग है, तो सिमिलरली आई came across, I have studied the structure of certain banks. तो हर बैंक के पास अगर मैं एक बेसिक डिवीजन की बात करूं, कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, कुछ के पास वेल्थ पोर्टफोलियो भी होता है. तो सपोज इफ यू हैव ए एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग, तो प्रेफरेबली अगर आप जेपी मॉर्गन या मॉर्गन स्टैनले या कहीं भी आप मूव करने का देखते हो, तो दे वुड प्रेफर कि आप कॉर्पोरेट बैंकिंग ही मूव, दो बेस्ड ऑन योर नॉलेज या मार्केट मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है, अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, यू कैन मूव इनटू द अदर डोमेन ऑफ आईबी एंड वेल्थ एज वेल. बट मोस्ट प्रोबेबली कॉर्पोरेट बैंकिंग को कॉर्पोरेट बैंकिंग में ही मूव करवाते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट दी सिटी सच एज बैंगलोर एंड मुंबई, वहां पे थोड़ा मूवमेंट इजी हो जाता है क्योंकि वहां आपको स्विच करने के ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड गुड़गांव, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है. If I talk about here, तो यहाँ पे we have a Royal Bank of Scotland, which is the in the name of NatWest Group, and इसके अलावा we have HSBC, we have Macquarie, Bank of America. तो यहाँ पे ये तीन चार ही हैं, but all of them are located in Gurgaon. But if I talk about the cities like Bangalore, Hyderabad, मुंबई, तो इन हैदराबाद काफी एडिशनल आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे डी शॉ है. डी शॉ में आप
मतलब स्विच कर सकते हैं. तो इट्स डिपेंड ऑन अ पर्सन टू पर्सन और द इंटरव्यू और द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू वेदर दे आर कन्विंस्ड with based on based on the interview you are giving or based on the knowledge a person is has acquired during a period of time. तो वो सब इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, बट बाकी सिटीज में इजीली हो जाता है और हम्म. बैंक टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत इजीली हो जाता ओके. ओके. ऑल इन ऑल, अगर वर्क कल्चर का बात करें अबाउट बार्कलेज, है. तो इज इट गुड? बहुत सपोर्टिंग है या कैसे है? If I talk about a work culture is quite good. मैं ये नहीं बोलूंगा कि प्रेशर ही प्रेशर है या काम ही काम है या फिर खाली ही बैठे हैं. सिंस हमारी जो रिपोर्टिंग होती है वो क्वार्टरली होती है, तो हम्म. हर एक साल में अगर मैं बोलूँ 4 महीने तो प्रेशर होता है. अगर हम्म. मेरा पहला क्वार्टर एंडिंग है जनवरी टू मार्च तो अप्रैल में प्रेशर होगा, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्वार्टरली क्लोज हो रहे हैं. हमारे केपीएमजी ऑडिटर है, तो केपीएमजी भी उठ के आता है, उनको भी बैलेंस शीट फ्रीज करनी है हम्म. क्वार्टरली बेसिस पे. इसके अलावा जो बेसिकली यहाँ पे वर्क कल्चर है, तो उसमें क्या हम्म. होता है, हम हमको डेज असाइंड होते हैं. तो ओके. हमारा यहाँ पे डेज ऐसे चलता है, वर्क डे 1 2 3 4. तो मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्क डेज काउंट होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है. हम्म. अदर देन दैट कोई यूके या हमारा नेशनल हॉलीडे हो तो हमें एडिशनल ऑफ मिल जाता है. और हमको हर वर्क डे पे एक्टिविटीज असाइंड होती हैं कि ओके. ये एक्टिविटी इस वर्क डे पे कंप्लीट करनी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इनिशियली, मतलब अगर आप नए हो तो आपको थोड़ा चैलेंज आता है कि आपको सिस्टम समझना है, आपको काम समझना है, बट इवेंचुअली दैट वर्क्स वो हो जाता है. और अगर मैं बात करूं कि टीम फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, तो अगर आपको कोई काम वर्क डे 2 पे देना है तो आप वर्क डे 1 पे चाहे उसे 1 घंटे में कर लो, चाहे दिन में कर लो, रात में कर लो, इतना फ्लेक्सिबिलिटी टीम दे देती है. और रेस्ट डिपेंड अपॉन द टीम और द मैनेजर यू आर वर्किंग अंडर. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, माई मैनेजर्स आर गुड. और मेरे को काफी, मतलब उन्होंने अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं, अलग अलग वेराइटीज ऑफ वर्क भी दी है. हम्म. और कुछ कुछ ऐसे काम थे जो स्पेसिफिकली, मतलब आई वुड से कि नॉट अ केक वॉक, बट आई हैव परफॉर्म. मेरे को डेलीगेट करे गए थे एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने मेरे को सपोर्ट भी करा है. और वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती थी कि मैं दिन में काम ना करके रात में काम करके दे देता था. बट दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट विच यू आर बिल्डिंग विद योर मैनेजर. तो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ काफ़ी है. और हम्म. हाइब्रिड मॉडल पे करेंटली वी आर वर्किंग. सो इतना कोई रश नहीं है कि ऑफिस ही जाना है. तो कभी आपको लगता है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते हो, तो आप जो भी इनकी पॉलिसीज है उसको आप मिनिमम कंप्लाई कर दो. तो रेस्ट की वो देख लेते हैं कि भाई हो जाएगा काम. और मैनेजर्स भी सारे ऑलमोस्ट कोऑपरेटिव है. बट हम्म. जो चीज मेरे को एक थोड़ी लगी कि आपका वर्क एलोकेशन अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो एक सर्टेन टाइम तक होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए. बट हम्म. वो एक चीज थी जो मतलब मेरे साथ हो रही थी. तो हम्म. हर 3 4 महीने पे मेरा वर्क एलोकेशन चेंज हो रहा था. बट वो भी ओके. है कि आपको हर 3 4 महीने पे कोई ना कोई नई चीज मिल रही है. बट वेयर आई वॉज लैकिंग कि एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग मेरे को नहीं हो पा रही थी. मैं एक काम शुरू करता था 3 महीने पे, मैं 3 महीने में उसको 60 70% समझता था, फिर मैं आई एंड अप लैंडेड इनटू अ न्यू एंटिटी, न्यू ब्रांच यू कैन से. तो फिर मेरे को स्क्रैच से शुरू करना पड़ता. तो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, बट एज अ वर्क कल्चर इट इज क्वाइट गुड. एंड स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट, मतलब इट इज अ गुड कंपनी टू वर्क विद. दे आर सपोर्टिंग फीमेल कैंडिडेट एंड इनकी जो पॉलिसीज हैं वो काफी अच्छी हैं इस चीज को लेकर. ओके. ओके. तो लेट्स सपोज अगर कोई बार्कलेज के इंटरव्यू में बैठना चाह वाला है टुडे और टुमारो और एनी डे, तो एनी टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव फॉर वो इंटरव्यू में बैठे? सिंस क्योंकि हमारा काम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल्स का है, और कॉर्पोरेट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मेजरली आईबी की मैं बात करूं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं. और कॉर्पोरेट बैंकिंग में लोन डिपॉजिट्स होते हैं. तो एज अ बैंक उन पे जो इंड एस एप्लीकेबल है या आईएफआरएस आई वुड से, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. तो अगर कोई इंटरव्यू के लिए अप्लाई करता है तो आईएफआरएस 9
मैं बोलूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आना चाहिए, हम्म, और अकाउंटिंग एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बार्कलेस के और भी डिविजन्स हैं जहाँ पे कॉस्ट की अकाउंटिंग होती है, एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हो गए और रिवेन्यू हो गया। तो मोटा मोटा आपको सारे आईएफआरएस भी नहीं, आपको एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हो गया, रिवेन्यू हो गया और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये अच्छे से प्रिपेयर करने चाहिए बिफोर यू एनकाउंटर एन इंटरव्यू। इसके अलावा सारा कॉन्फिडेंस का गेम है कि अगर आप कितना कॉन्फिडेंटली सामने वाले को जवाब देते हो। और वन एडवाइस आई वुड डेफिनेटली गिव टू एवरीवन कि अपना जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार ढंग से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि आई केम अक्रॉस सर्टेन इंसिडेंट इन पास्ट कि बंदा क्या जो कैंडिडेट है वो लास्ट राउंड में आ जाता है और वीपी राउंड में वीपी पूछता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने पढ़ा है? उसे पता ही नहीं होता कि मैं किस पोजीशन के लिए जॉब दे रहा हूँ। तो दैट इज द वन पॉइंट, and accordingly on the basis of job description you can prepare the interview, बिकॉज इन सर्टेन प्रोफाइल अगर मैं बात करूं तो अगर वैकेंसी निकली है रिपोर्टिंग की तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रिपोर्टिंग कैसे होती है। और क्योंकि ये बैंक है, अब ये रिपोर्टिंग करेगा यूके के हिसाब से, तो आप थोड़ा सा गो थ्रू करिए कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। मतलब कोई भी टेक्निकल नॉलेज टू द पॉइंट या हार्डकोर नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता, बट थोड़ा बहुत अगर आप टच अपॉन कर देते हो तो आपका सिलेक्शन का एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आईएफआरएस इज वन थिंग, एंड इसके अलावा सारा कॉन्फिडेंस है कि हाउ कॉन्फिडेंटली यू कैन आंसर द क्वेश्चन। हम्म, हम्म, हम्म। So Gaurav, I think we have covered most of the aspects of your job, और अगर इस जॉब में जाना है तो कैसे जाना है ना? So I would like to thank you to come to give all the insights about this. So thank you, Gaurav. So yeah, thank you.